the number of these mask makers are kind of have diminished. Okay, it's one thing to lament, but I'm also saying, how do you start thinking about these things? I mean, what's the breadth at which you're thinking? Okay. For instance, this is a common problem with a lot of things to do with traditional crafts in India. Okay. We are perennially lamenting the fact that things that crafts people are leaving, things are dying, all kinds of things. But if you go to, for a moment, just think, all traditional crafts in India, at the core of it, are a couple of things, I mean, which are basically stories from our mythologies. Okay? Now, in today's time, I'm saying this is a slightly dicey thing to be saying in today's time. I mean, I can be mistaken for being on a certain side of the establishment, which I'm not. Okay? The thing is, if you do not care about, let's say, the Ramayana or the Mahabharata, why the hell would you care about, or how would you associate with the sculptures that are kind of on the walls of the temples of Belur, Halabid and Chennai? There's no way that you would. So the point is, you can't just be talking about it in a superficial manner, where you say, oh Nene, it's about livelihood, so the guy leaves Purulia, comes to Calcutta and starts working in a mall. That's one aspect of the truth. But the truth is actually kind of deeper, because if say your kids don't know the Ramayana, the Mahabharata, if you're not telling them that, but you're kind of making him watch Pokemon or Spider-Man, why the hell would you who is that artisan kind of creating that art for? He's not going to be buying it. You understand what I'm saying? So I think there is how do you start engaging with subjects and ideas? To what levels do you go? Not all of it may be possible to photograph. But I'm saying that's exactly what I said. It's not about just doing photography here. It's about understanding these broader issues, that not everything can be photographed. Right? So I think when we are looking at photography projects or engagements, I think they need to be now how you do that is a matter that can be spoken about at length at different times, depending on what one is doing and all that. But I think okay, let me just get somebody else to speak before I ramble on a little more. Yeah. अभी इंद्रनील ने बताया कि आप ऑफकोर्स ये उनका आर्ट फॉर्म, ये उनके फोटोग्राफी का सब्जेक्ट अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसका पर्पस अलग है. मैं जो फोटोग्राफी करता हूँ दैट इज ऑलटुगेदर डिफरेंट. उसका इम्पैक्ट अलग है, उसकी टेक्निक अलग है, उसका हैबिटेट अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसका ऑडियंस अलग है. बट फाइनली फोटोग्राफी इज फोटोग्राफी, इट्स अ आर्ट फॉर्म. हम लोग शूट करते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि आप शूट करते हैं बाद में क्या, इन्होंने उसका बुक पब्लिश किया, किधर ना किधर का हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए. आप जो इंडिविजुअल आदमी, जैसे इन्होंने बोला गवर्नमेंट क्या कर रही है, उधर के लोकल अथॉरिटीज कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हैं. मेरे जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी केस में कि आपको मालूम है कि देयर आर ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन फॉरेस्ट. आप मुंबई में भी देखोगे कि संजय गांधी नेशनल पार्क में जो प्रेशर है, अभी थाना से पुरुली का जो अंडरग्राउंड टनल में बन रहा है, काफी सारे झाड़, काफी सारे वाइल्ड लाइफ की उसमें हानि होने वाली है. बट उसमें हम लोग क्या करेंगे? सो इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक्स, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट द इश्यूज, हम लोग उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? अगर हम लोग ये देखेंगे तो काफी सारा इम्पैक्ट आ सकता है. एक अकेला आदमी, एक अकेला फोटोग्राफर क्या कर सकता है? तो ऐसा नहीं होता है. एक छोटा सा इंसिडेंट होता है. पर्टिकुलरली इन्होंने बोला कि प्री कोविड, पोस्ट कोविड में काफी सारे हम लोगों ने चेंजेस खुद देख लिए, हम लोगों ने खुद फेस कर लिए, खुद एक्सपीरियंस कर लिए, अच्छे तरह से, बुरे तरह से, व्हाटएवर.
मैं 30-35 साल से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स पहले के ज़माने में फिल्म कैमरास थे, स्लाइड कैमरास थे, वो टाइम का डेटा था। बाद में 2002 ऑनवर्ड्स डिजिटल फोटोग्राफी शुरू हुई, तभी ऑफ कोर्स डिजिटल फोटोग्राफी में शिफ्ट हुआ और डिजिटल फोटोग्राफी शुरू की। तो काफ़ी सारा डेटा डिजिटल फॉर्मेट में मेरे पास आ गया। पहले तो एनालॉग में था, अभी वो किधर तो कबर्ड में मेरे स्लाइड्स पड़े रहेंगे, किधर तो प्रिंट्स पड़े रहेंगे, नेगेटिव्स रहेंगे, कोई देखता नहीं। पहले तो स्कूल में जाके हम लोग स्लाइड शो करते थे, अभी नहीं, अभी सब कुछ अवेलेबल इंटरनेट पे है, यूट्यूब चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, काफ़ी कुछ है। बट वो जो डेटा पड़ा हुआ था वो इतने दिन तक सिर्फ युवराज गुर्जर के हार्ड डिस्क में, उसके हार्ड डिस्क बैकअप में पड़ा। जब भी कोविड आया तो ऑफ कोर्स एवरी संडे में मेरे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जंगल में जाता था। बड़े टूर्स होते थे, छोटे टूर्स होते थे, बट एवरी टाइम स्पेंड करते थे कि नेचर में जाओ, जो कुछ दिखता है वो कैप्चर करो एंड देन उसको स्टोर करो, उसके ऊपर स्टडी करो। तो इतना सारा डेटा जमा हुआ था, तो उसका क्या है? तो जैसे ही कोविड में बाहर जाना बंद हुआ, अलाउड ही नहीं था, जाने का भी डर था और फ्रैंकली इट वाज इलीगल बाहर घूमना। और तो बोले वो टाइम का क्या? तो एक नेशनल ज्योग्राफिक की और कॉर्नेल इंस्टीट्यूट की एक आई नेचुरलिस्ट करके वेबसाइट है, मोबाइल ऐप की है, उसके ऊपर आपको आपका जो ऑब्जर्वेशन नेचर रिलेटेड, वेदर इट इज डेड एनिमल और लिविंग एनिमल, बट एनी लिविंग थिंग, एनी लिविंग, वो बर्ड्स होंगे, एनिमल्स होंगे, स्पाइडर्स होंगे, बीज होंगे, प्लांट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, ऑर्किड्स होंगे, कोई भी तरह का आपको उसमें रिकॉर्ड करना है, आइदर ऑडियो और इमेज। उसमें 4 चीज जरूरी होते हैं कि किसने लिया, किधर लिया, कौन से डेट में लिया और उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। So I slowly started posting my images, digital images मेरे पास थे 2002 onwards, क्योंकि उनको डिजिटल था, पहले के मेरे पास स्कैन इमेजेस नहीं थे। वो मैंने डालना शुरू किया। पहले दिन में मैं 2 घंटा 3 घंटा मैं डालता था, बाद में दिन में मैं 16 घंटा, वो एक नशा सी आ गई कि क्या करना है। सो दिन में मैं 1000-1200 फोटोज मेरे अपलोड करता था। 16 घंटा बैठ के किया। आई जॉइंड आई नेचुरलिस्ट इन 2016, तभी मैंने सिर्फ 200-250 फोटो डाले थे और बाद में रुक गया क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था, ऑफिस है, बाकी है। कोविड के टाइम ही टाइम था, डेटा बहुत था और एक मन में ख्वाहिश थी कि हाँ ये डेटा जाना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे 1000-2000 फोटो डेली बेसिस में डालने शुरू किए। आई रीच अराउंड 13,000 to 14,000 photos, images clicked by Yuwaraj Gurjar at various places in world. There are more than 3,500 species I captured till then. तो उसका साइंटिफिक वे वो कैटलॉगिंग हो गया। पर्टिकुलर एक 2004 का मेरा एक इमेज मैंने पोस्ट किया। इट वाज क्लिप्ड इन भरतपुर नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी में। मैंने एक इमेज पोस्ट किया जिसमें सॉफ्ट वाटर टर्टल्स, जो कछुआ है, वो सांबर को खा रहा था पानी में। जिस दिन मैंने फोटो पोस्ट किया, दूसरे दिन सुबह उठने तक मेरा मेल बॉक्स फुल हुआ था। ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड एटलीस्ट 6 to 8 साइंटिस्ट, दोज हु आर वर्किंग ऑन टर्टल, मतलब कि ये आपने क्या डाला, इज दिस रियल, और आपके पास इसके कुछ इमेजेस क्या, क्योंकि साइंस को अननोन था कि एक टर्टल सांबर को खा सकता है। एंड उसका हार्ड को मैंने फोटो डाला था, तो उनको अलग इमेजेस दिखने थे। तो पूरे टर्टल के ऊपर साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड है, यूएस लेंगे, यूरोप लेंगे, ऑस्ट्रेलिया लेंगे, उसमें खलबली मच गई कि ये क्या होगा। एवरीबॉडी वाज आस्किंग द फोटो एंड अदर डिस्क्रिप्शन कि ये क्या होगा। सो ये सोशल मीडिया यू कैन से, बट ये एक डेटा 2004 से 2020 तक सिर्फ युवराज गुर्जर के हार्ड डिस्क तक सीमित था। वो अभी साइंटिफिक लेवल, साइंटिफिक स्टूडेंट्स के लिए वो डेटा ओपन हुआ और उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। So, आज के जमाने में आई एम इंडिया के टॉप मोस्ट 2-3 फोटोग्राफर्स में हूँ। आज मेरे अराउंड 23,000 रिकॉर्ड्स उसमें है। आज मेरा हर एक साइंटिफिक जो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरा डेटाबेस उनके लिए ओपन है। जो इतने दिन तक वो डेटा सिर्फ युवराज गुर्जर के हार्ड डिस्क में था, आज वो डेटा ओपन हुआ है। जो स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन दैट डेटा, दे आर यूजिंग देयर डेटा फॉर देयर रिसर्च with
ड्यू कॉपीराइट एंड ऑल दैट, बट उनको वो फायदा हो रहा है। सो एक इंडिविजुअल आदमी के फोटोज या उनके इमेजेस क्या कर सकते हैं, ये मेरा तरीका है। उसका मुझे पर्सनल बेनिफिट ऐसा हुआ कि वो मेरा एक क्लाउड स्टोरेज हुआ। और आज अगर मुझे जानना है कि युवराज गुर्जर ने कितने टाइगर्स कैप्चर किए, तो मुझे विद इन 2 और 3 लिस्ट मुझे मिल जाता है कि युवराज ने आज तक 1672 टाइम टाइगर क्लिक किए इंडिया के 18 या 19 स्टेट्स में, या इतना डेटाबेस मिलता है जो पहले मुझे नहीं मिलता। सो ये इंडिविजुअल मेरा बेनिफिट है कि पूरा जो मेरा साइंटिफिक वे में लिस्टिंग हो गया है वो हुआ है। एट द सेम टाइम मेरा डेटा कोई ना कोई जो जूनियर बच्चा है, स्टूडेंट है, वो यूज कर रहा है। सो वो डेटा मेरे तक सीमित नहीं रह गया, उसका एजुकेशन तौर पे, अवेयरनेस के तौर पे वो आज ओपन डेटाबेस है। सो एक इंडिविजुअल फोटोग्राफर क्या कर सकता है हर एक लेवल में, ये कर सकता है। I'll add up something to both what they have said. Then I'll come to Sir from you. First thing is that I don't know how many of you have got any historian or any travel guide while you are reaching out to any historic place. Have you got? So I have one of my friends who is into history, honors and all, and we both plan to reach out to Kalna, the temples of Kalna, where you have ample temples and one location you want to travel. That's in a part of West Bengal. I have visited Kalna before as well, but with him it was like a different dimension. He started telling me each and every story that has been engraved and in the story that has been described across the walls of the temples, different temples and how they are connected. Why this temple have Krishna, why that temple have a separate Hanuman, why this temple has Ganesha, why that trunk is on a different side. Each and everything with the connection of, so everything has a meaning. We as a normal tourist also once we go, no, we just see कि अच्छा बहुत अच्छा, we click and come back. But the moment you will start getting the in depth of it, no, कि इसका meaning क्या है? Like we have been to Ajanta and Ellora, and we took a guide. कि चलो भाई, we spent on a guide. The guide started letting us see intricate details of the work. So I still remember there was one sculpture which is almost like आधा टूट गया है, it's like little bit of remaining. So he explained the story that sir, this is a newlywed Maharani, and so I told why you are talking about newlywed. So he was like, sir, good question. You see the feet. So there the feet, no, this second finger, no, was on the thumb. The sculpture had one like that. बोलता है कि नए नवेली दुल्हन जो शर्मा के वो उंगली ऊपर आता है ना, that has been done out here. So this is like the Raja has married for the second time. ये नए नवेली दुल्हन waiting for the Raja to come, and that time the posture. Look at this small thing. I still remember that. एक उंगली बस ऊपर है. As a tourist, as a photographer, I may have missed it. Trust me, this is where a fine artist finds these small details. A photographer misses it out. Quite obvious, क्योंकि आपको दूसरा frame लेना है. You run away. But if you are going to any kind of those sites, try to find out these small subjects. You know, that will help you to develop a homework thing or something to start studying behind it. It adds a lot of value to your photography. It may be technically not sound as a great photographer, but for you it will be a great study. For the others will be a great study. Similar thing with Yuvraj sir. Whenever we have gone for macro, with macro we have taken n number of good shots. बहुत अच्छे हमारे पास गैजेट्स है, लाइट्स से हम यूज कर रहे हैं, हमें आता है. लेकिन सर जब जाते हैं, वो इंसेक्ट का क्या है, ये पत्ते का क्या है, ये पत्ता कैसे होता है, ये कैसे है, ये क्यों है. See, all those minute things for me, for any other photographer is an additional benefit. It adds a lot of value to your photograph. वो photograph पे you add information, so that's very important. Now we'll come to Madhavan sir. I'll request you sir to focus on few things which we are now missing a lot of things now, especially the print formats.
that is almost eliminated due to several reasons we understand. But before I move on, as I told you, today I will give introduction of each one of our changes from visual point of view. Now, with a heavy heart, I had a discussion with sir one day when the magazine was, the printing formats were about to close. And I requested sir, okay sir, जो भी format आपके पास अभी available है, is it possible that I can get that? He called me at his residence and he gave me all the hard copy editorial formats of the magazine, which is still properly reserved with me. So big round of applause to Pillai sir, because see, as I told you, like there are pillars of support to VIBGYOR. It is not always financial. There are n number of people, those who have loved us in such a manner that gives us a motivation कि भाई चलो करते हैं कुछ अलग करते हैं. So I'm still finding a suitable way in which that books can be like reaching out to more people. We tried a format of a library as I told you, but again people from Calcutta and all travel this and all. But now we are trying to make some other formats from it. We are trying to figure out small articles of it and then publish it again as a part of the magazine. So let's see how best we can do. We can do that. But sir, we would love to hear from you, because since we are launching a print format of a book today. Fantastic. so I will request your view on photography and the print format and why people should always still have a part for that. So to begin with, let me first congratulate you, Thank you, sir. on the anniversary edition of. To all of us, sir. Congratulations to all of you. I think without the support of all of you, we would not be doing this today. And of course, I must say this. It's an entirely it's a passion. With which you have seen, you have been following your keep sending messages. Yes. So I've seen all the various activities and all the so it becomes very fascinating for me to see how involved you are with the entire process of keeping the care and all the members so active. So congratulations for that. I think that is very wonderful. It's wonderful that you're having this celebration. Thank you. I was particularly fascinated by the cover that you posted. Yes. So I thought that was, and that completely fast-flowed me. And I looked at myself, okay, this is something that that is very fascinating. And then when you invited me, I said, "I'm this kind of stuff." So I think that cover was very fascinating. Thank you, sir. Thank you so much. Because, sir, I always felt that this book should reach out. So the plan is like, to be very honest, more than just a photography. The plan is, to be very honest, sir, there are different Durga Puja committees in Mumbai, Calcutta. 2 cities we have the major formats, and every year in Durga Puja there is a huge amount they spend on the cultural activities. They spend on celebrity visits and all. So, and usually after this April they start planning. So it is my attempt that since we want them to have a good livelihood, I feel that just giving them money is not the right way. That will actually, free money is not a good solution. It's not sustainable for me. My point is they should have a livelihood to keep the art form alive. So we will appeal to different such communities. We will also try to reach out to the Ministry of Culture. We will try to take some podcast platforms to say these things, and we will try to get them some job, because there is a fund, there is a requirement at these levels. So if they want, we will connect to them, and they can directly have a word, and they can. So they will come down. They have already come down to Mumbai. They have performed here before as well. So they know how to do it, and honestly speaking, sir, their requirements are very less. They do not have a very lavish livelihood. They just want to survive. They want this art form to survive. So I think that can be done. So we have started this process. So let's see, with all your blessings and support, I hope definitely we will find a way out so that we don't have to see only YouTube videos. We can still go to Purulia and see them doing the dance forms. I'm sure. Yes. So without waiting any further time, so let's open the book and have a view. Everyone is, as I told you, I were not still there. Even the participants of the book have not seen the designs. I have kept it totally suspense, so that the love and the affection towards the book grows more and more.
So sir, let's join for. नहीं ये आप हाथ में ले लीजिए. हाथ में ले लूं? हाँ. Let's join for the book launch, please. I'll share. One book. The plastic is very tight, so you can tear it off. He has also like made it that way only, that you can tear it off once. Back all this way, Okay, so I think it needs a big round of applause. Stop, 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 stop.